Namaskar and welcome to Sansad TV. I am Rajiv Kumar Singh. The 9th G20 Speakers Summit began on Friday, the 13th of October in Delhi's Yashobhoomi. PM Narendra Modi graced the occasion during the inauguration of the summit. Two sessions, the first on sustainable development goals and the second on sustainable energy transition, took place on Friday. Later, dignitaries also visited the Parliament of India. In this program, we would be looking at the events related to the summit that unfolded on 13th of October. Speakers and heads of delegations arrived at the ground floor lobby of Yashobhoomi for the 9th Speakers Summit of the G20 nations, popularly known as P20 or Parliament 20. Speaker of Lok Sabha and Chairman of the summit, Om Birla, individually welcomed speakers and heads of delegations. The photo op took place at the Leaders' Lounge on the 5th floor of Yashobhoomi. The P20 inauguration took place at the Palash Hall, Grand Ballroom C of Yashobhoomi. Prime Minister Narendra Modi graced the occasion as the chief guest. Chairman of the summit, Lok Sabha Speaker Om Birla, formally welcomed the delegates. G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। Lok Sabha Speaker then elaborated on the theme of the 9th Speakers Summit of the G20 nations. वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसद हैं। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। 4 sessions were planned for the summit. Lok Sabha Speaker informed the delegates on the sessions and topics for discussion. सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। IPU President Duarte Pacheco congratulated India for the passing of Women's Reservation Bill in the Parliament. It's impossible to think in an inclusive democracy if we forget 50% of the population representation. It's impossible. It's a democracy, but it is not inclusive. So we need to increase the participation of women. Because we are different, men and women, we are different, but we are complementary. Different sensibilities to solve the issues. Maybe if we have more women in the leadership of our countries, we will not have so many wars. Welcoming speakers, presiding officers and delegates on behalf of 140 crore Indians, Prime Minister Narendra Modi said that the summit was taking place on the land which is the mother of democracy. P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ
हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। The Prime Minister alluded to the biggest democratic exercise, the Indian general election that is to take place next year with 1 billion voters. He also invited the delegates to come and witness it in India. आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। Prime Minister Modi also emphasized the need to overcome the global crisis of confidence. मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। Prime Minister Modi also talked about the challenge of terrorism and the need for public participation to solve the world's challenges. दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। The Sustainable Development Goals are a set of 17 global goals established by the United Nations in 2015 as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. These goals provide a comprehensive framework for addressing social, economic, and environmental challenges to achieve a sustainable future for all. The first session began with the chairman emphasizing India's active participation on Agenda 2030. एक्सेलेंसी, मुझे आपको ये बताते खुशी हो रही है कि भारत सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा तैयार करने और इसके अपनाने और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विधायी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से विकास की नई दिशा निर्धारित की है। हम एसडीजी के एजेंडा 2030 उपलब्धियों एवं तीव्र प्रगति विषय पर
विचार विमर्श करेंगे। Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh was moderating the session. Speaker of the Indonesian House of Representatives talked about the challenges faced in achieving the SDGs. The achievement of SDGs so far has been affected by unprecedented challenges on multiple fronts, such as war, rising geopolitical tension, climate change, and uneven recovery. All are interlinked and demand urgent solutions. In addition, the SDGs' slow progress was rooted in the unjust global order. To address this issue, we need to create more inclusive world order. Nicola Beer, the Vice President of European Parliament, said the world was far from achieving the Sustainable Development Goals. Our project is far from complete. Progress on the Agenda Sustainable Development Goals, or SDGs, has even been uneven. Only a minority of our targets are on track. Nearly a third have stalled or even reversed. At this rate, we will leave many behind. Why? Well, in a part, we have faced blockages that we did not anticipate in 2015. We have also learned lessons along the bumpy road. First, we faced the COVID-19 pandemic, which we claimed some 7 million lives and dramatically impacted economy development. For the first time in decades, global poverty and inequality rose. Amos Mesondo, chairperson of the National Council of Provinces, South Africa, made an intervention. Given the aim of the G20 Parliamentary Speakers Summit P20, which includes promoting parliamentary cooperation, enhancing engagement between governments, parliaments, and stakeholders in the implementation of various G20 outcomes, and advance the 2030 Agenda for Sustainable Development, we should contribute to the achievement of the outcomes of the last month's G20 Leaders Summit, particularly in relation to SDGs. We can do so, as already agreed during the last P20 held in Jakarta in 2022, by, amongst other things, helping to transforming the global commitments of SDGs into national realities, and by helping in redoubling our efforts as parliaments to mobilize resources to bring the SDGs back on track. The world will be a better place if Agenda 2030 is pursued with vigor. Later in the day, the second session based on the theme One Earth, Sustainable Energy Transition, Gateway to Green Future was organized on Friday. Speakers of Australia, Brazil, UAE, among others, shared their ideas during the session. Inaugurating the second session based on the theme One Earth, Sustainable Energy Transition, Gateway to Green Future, Lok Sabha Speaker Om Birla said that India is implementing extensive action plans for the most ambitious clean and green energy transition in the world. He added that India has set an ambitious target of achieving net zero by 2070, but before that, we have challenges to overcome in order to achieve these goals. भारत दुनिया की सबसे आकांक्षी क्लीन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए व्यापक कार्य योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। इस वर्ष 27 तक नेट जीरो का लक्ष्य हमने रखा है, लेकिन उसके पहले हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को प्राथमिकता दी है। भारत की अध्यक्षता के अंदर G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप के लिए हमने फंडिंग, ऊर्जा दक्षता, प्रौद्योगिकी गैप के विषयों पर व्यापक चर्चा की और सभी G20 देशों ने इसके सहयोग के लिए अपने को आश्वासन दिया है। सफल समावेशी हरित ट्रांजिशन के लिए
हमारे सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इसलिए हम अपनी अपनी संसदों के अंदर भी इस तरीके की चर्चा करें और इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों, अनुभवों का लाभ सरकार प्राप्त करे और इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें। Taking part in the session, Australian Speaker of the House of Representatives, Milton Dick, shared efforts taken by his parliament in order to make it greener and sustainable. Particularly in the last 5 years, we have been making changes and introduced a number of energy efficient measures to make the Parliament more energy efficient and sustainable. We have installed more than 230 solar panels. They generate enough energy to illuminate lights in both the Senate and the House of Representatives chambers. Our main gas boilers were upgraded to heat and supply hot water to the building and have been transformed by 20% more energy efficient. All lifts were upgraded across the building, which use 30% less energy. The commercial kitchens that feed up to 5,000 people on a parliamentary sitting day have all been upgraded. Stating that energy is critical in our daily lives, the Speaker of the Parliament of Singapore informed about her country's ambitious targets to reduce carbon emissions and improve energy efficiency. Singapore has made significant strides towards a more sustainable energy future. We have set ambitious targets to increase the share of renewable energy in our energy mix, to reduce carbon emissions and to improve energy efficiencies. Singapore made early policy changes to reduce our greenhouse gas emissions, for example, by switching from fuel oil to natural gas, which is the cleanest form of fossil fuel, for power generation. 2 years ago, about 95% of our electricity was generated from natural gas, and this compares to only 18% in year 2000. We do not provide any subsidy for electricity so as to ensure energy is used judiciously. Addressing the session, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh maintained that India has remained steadfast in its commitment to sustainable growth, renewable energy expansion. Excellencies, India has been working steadily to build the ecosystem for sustainable energy transition. This ecosystem consists of 3 key players: the state, the industry, and the ordinary citizens. All 3 organs of the state are doing their bit to help bring about this transition. While the legislature and the executive are working as enabler to provide the legislative and policy framework for this transition, the judiciary is ensuring that all stakeholders adhere to their legally defined roles. The industry is acting as a provider for producing clean energy products. The citizens are also responding positively to the cause of clean energy transition by adopting clean energy-based products. Excellencies, despite being at the bottom in terms of per capita emissions, India has set ambitious targets for herself insofar as clean energy transition is concerned. Concluding the session, Lok Sabha Speaker thanked all the speakers for their valuable inputs and underlined the importance of clean energy. आज के सत्र में हमने सतत ऊर्जा ट्रांजिशन, हरित भविष्य की ओर विषय पर उपयोगी विचार विमर्श किया। सतत ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपनी पृथ्वी के साझे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमें अपनी भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की जरूरत है। Delegations from Brazil, Russia, Singapore, among others, also attended the session. Lok Sabha Speaker Om Birla informed that the joint declaration of the 9th G20 Parliamentary Speakers Summit got adopted after a deliberation of 14 days. IPU President congratulated Parliament of India for efforts to achieve the consensus
on the final declaration. मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी टीम द्वारा पिछले 2 सप्ताह 14 डेज तक अथक प्रयासों के बाद हम P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति बनाने में सफल हुए हैं। ये सफलता आपके सहयोग एवं समर्थन से संभव हुई है। ये हमारी सामूहिक उपलब्धि है और मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। आपके सहयोग से संयुक्त वक्तव्यों पर हमारे बीच में आम सहमति इसलिए बन पाई है कि P20 की बैठक में हमने अपने मतभेदों से ऊपर उठकर उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमें एकजुट करते हैं। इसलिए मुझे इस सभा की ओर से इस संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अंकित करने के प्रस्ताव हेतु बहुत प्रसन्नता हो रही है और हम सब के लिए ये गौरव का विषय भी है। संयुक्त वक्तव्य एडॉप्ट करने के बाद हम कल इसे औपचारिक रूप से जारी करेंगे। एक्सेलेंसी, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सब सहमति है? ओके, हम सब आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और संयुक्त वक्तव्य को एडॉप्ट कर लिया है। It is important. It shows that the P20 has a concrete result with one declaration about important issues. Will not be the text that the country A, B, or C would like, of course, because it is not a declaration of the country A, B, or C. It's a declaration of all of us. And so, just to express all my gratitude to the India, to the Parliament of India for all the efforts, and to each one of you that worked very hard during these days in a meeting, to several meetings, a lot of hours, to achieve the consensus that it was possible. Here in Delhi, we reach a final declaration. Thank you for all your efforts. Later in the day, speakers and heads of delegation of Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, Oman, Spain, European Parliament, Italy, South Africa, Russia, Australia, Brazil, among others, paid floral tributes at the statue of Mahatma Gandhi in the Parliament House complex. Delegates also visited the Parliament House and took a tour of both the Lok Sabha and Rajya Sabha chambers. They also visited art gallery in the Parliament House. The delegation also met Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar at the Samvidhan Sadan. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the two-day 9th G20 Parliamentary Speakers Summit on Friday. That is all we have in this program. Keep watching Sansad TV. Good night.